Hello and welcome back to With Soul. In today's class, we are going to talk about 7 C's of communication model. अब communication skills की जब हम बात करते हैं तो communication के model में there's a very important model that's called 7C model. अब 7 C's are very important for communication. If you want your communication to be effective, you need to consider these 7 C's while communicating with anyone. So let's see what is communication and what are these 7 C's of communication. Starting with communication होती क्या है? Communication is the process of sharing ideas, information or feelings. कोई भी बात हम कोई ideas, information share कर रहे हैं, उस process को communication process कहते हैं. Effective communication is essential for personal and professional success. Yes, we cannot deny the importance of effective communication in our personal as well as professional lives. If we don't communicate well, हमारी communication skills अच्छी नहीं है, so there are more chances that we get into misunderstandings. हम अपनी professional और personal life में misunderstandings का ज़्यादा सामना करेंगे. To avoid having such scenarios, we should improve our communication skills. And this is a wonderful model to improve our communication skills. So let's dive into what is 7C model of communication. तो 7 C's हैं क्या? पहले उनको देख लेते हैं. क्लियर होनी चाहिए कम्युनिकेशन, कंसाइज होनी चाहिए, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. ये 7 C's अगर आपकी कम्युनिकेशन में होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन वुड बी काउंटेड एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी और समझी जाएगी कम्युनिकेशन. सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज क्लियर इन 7C मॉडल. दिस इज द फर्स्ट C and clear means you need to ensure your message is easy to understand. Clearly, साफ बात करनी है. Avoid jargons, technical terms or complex words. Jargons specific word होते हैं किसी एक field के. Jargons को avoid करना है, technical terms को avoid करना है और मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना. For example, instead of saying, we must leverage synergies for optimal outcomes, instead of that, a lot of people would not understand that. But if we say we should work together to achieve better results, we would easily understand. So it's the same thing, but just said clearly. Next C is concise. So our communication has to be concise. So we should keep our message short and to the point. लंबी लंबी कहानियां कहने से बेहतर है कि to the point, short बात की जाए, मुकम्मल बात की जाए. Avoid unnecessary repetition while talking. For example, instead of saying it is requested that you kindly submit your report by Monday, you can just simply say submit your report by Monday. It's the same thing but concise. क्यों बार बार requested and kindly submit your report? Just say it clearly and concisely. The next C in communication model is concrete. अब concrete का क्या मतलब है? You have to support your ideas with facts and figures. Make your message specific, clear and supported by facts. अब concrete में facts होने चाहिए clear और facts और figures correct होने चाहिए. To avoid vague statements, अब vague statements की बजाय कि we have improved a lot. Instead of that, we can say our sales are improved 10% in this month. For example, instead of saying sales improved recently, it's a vague statement. We can say sales increased by 10% last month. The next C in communication model is correct. तो communication में हम जो भी message communicate कर रहे हैं, it has to be correct. Ensure your message is accurate and grammatically correct. जो हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं वो करेक्ट है, उसको हमने डबल चेक करना है और ग्रामेटिकली मेक श्योर दैट यू आर सेइंग द राइट सेंटेंस. Verify facts, figures and names. For example, you can double check numbers in a report or names in an email to avoid any misunderstanding. The next C of communication model is coherent. So our communication has to be coherent. अब कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि पूरा टेक्स्ट आपका पूरी कम्युनिकेशन जुड़ी हुई हो, एक दूसरे के साथ हम लिंक कर सकें. जो भी बात की जा रही है वो उसका हमें लिंक समझ आ रही है कि ये बात इस बात से रिलेटेड थी और उससे नेक्स्ट ये बात ऐसे रिलेटेड. इट शुड नॉट लुक लाइक कि हम सेपरेट कभी हम कोई बात कर रहे हैं, कभी कहीं की बात उठा के कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. सो इट हैज टू बी कोहेरेंट. योर मैसेज शुड बी लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड. लॉजिक होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए. एवरी पॉइंट शुड फ्लो नेचुरली फ्रॉम प्रीवियस वन.
प्रीवियस वन से कनेक्शन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन एग्जाम्पल फ्रॉम प्रेजेंट बैकग्राउंड. अभी जो कुछ हुआ है उससे हम बताएंगे कि समथिंग हैपेंड राइट नाउ. व्हाट वाज एक्चुअली द रीजन फॉर दैट थिंग. कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, रूट कॉज क्या था, उसका सोल्यूशन क्या है, एंड व्हाट एक्शंस वी शुड टेक ऑन दैट. Next C of communication model is complete. So we have to communicate a complete message, include all necessary information the receiver needs to understand and act. जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करने जाएं तो अपने जहन में पहले ये सोचें कि अगर मैं ये कम्युनिकेशन सुन रही होती तो मेरे जहन में क्या सवाल आता, अगर मैं ये बात सुनूंगी तो मैं क्या क्या कुछ सोच सकती हूँ. So think about that and make your communication clear and complete. For that, to make your communication clear, you need to follow 5W1H rule. सोचें कि who, what, when, where and why. And 1H, that's how. इन सब सवालों के जवाब जब आप सोच लेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगी. For example, meeting on Monday at 10 a.m. in conference room B to discuss question 3 targets. Bring your reports. Next C of 7C model is courteous. So courteous का मतलब होता है to be polite, respectful and considerate. हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनके बारे में ख्याल करना कि what is the type of relation we have and what type of choice of words we should do. So to say, what was this whole 7C model about? It was about 7 C's that should be there in your communication. Summarize करें तो clear, easy to understand message होना चाहिए. Your message should be concise, short and direct. It has to be concrete, specific and based with factual data. And then it has to be correct, accurate and error-free. Check it twice. And then it has to be coherent, having logical sequence and organization. It has to be complete and it has to include all information that's required. And you have to be courteous of the audience while communicating. Why 7 C's are important now? अब जरूरी क्यों है कि हम 7C मॉडल का ख्याल रखें कम्युनिकेशन करने में? Because it prevents misunderstandings. It saves time and effort. हमारी भी और सुनने वाले की भी. हम एक कंप्लीट, क्लियर, कंसाइज 7C को फॉलो करता हुआ एक कम्युनिकेशन मैसेज हम भेजेंगे तो it would save a lot of time. Miscommunication नहीं होगी, misunderstandings नहीं होंगी. It builds trust and credibility. And it improves our personal and professional relationships. And we can improve our communication effectiveness in every context using 7C model. So you can apply 7 C's in your emails, reports, presentations, and day-to-day life conversations. You can practice each C regularly to become an effective communicator. And effective communication can lead to better teamwork, clarity, and success. With that, we are done with today's 7C model of communication. We'll be back with another exciting video tomorrow with Vitsoul.